why exactly is there so much misinformation going on regarding all this India and Pakistan war? आपने नोट किया होगा किसी न्यूज़ चैनल ने कराची का पोर्ट फतह कर लिया है, तो किसी ने पूरा पाकिस्तान फतह करके अफगानिस्तान की तरफ चला गया है। पिछले एक हफ्ते में 2-3 दफ़ा अखंड भारत बन चुका है। पर why? What purpose does that serve? There's actually a science-backed answer. Political science में कुछ theories हैं that can help us understand exactly what is going on. Firstly, let's get some fillers out of the way. कुछ बहुत basic tendencies हैं that are just human nature, in which we like to fantasize things, and we create news about that. But there's another part of it, a psychological reason for why that happens, and that's simply because the more shocking the news is, the more views it will get. So at the very basic level, there's nothing more than just careless, reckless journalism going on. Fake news banti hai and people forward it without any sort of verification. But the second thing is, which scholars like Paul Virilio talks about in their book, The Information Bomb. This is the technical one to pay attention to. Paul talks about how when there is an extremely sensitive high alert situation, news and narrative is everything. So what states do is they increase the spectacle, the admiration level कि कोई बहुत ही बड़ा काम कर दिया. That level of wow, they increase that, and they increase the speed, the frequency with which people get news. उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि people don't have enough time to verify those things. Fact checkers, independent fact checkers, किसी भी जंग के अंदर थर्ड पार्टी अनबायस्ड इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर्स होते हैं ताकि वो फिगर्स को क्रॉस वेरीफाई कर सके. इंडिया फॉर द मोस्ट पार्ट हैजंट अलाउड देम एट ऑल. पाकिस्तान ने तो इंटरनेशनल मीडिया को इनवाइट किया है, एंड आई थिंक सम ऑफ देम आर ऑलरेडी हियर, बट इंडिया हैजंट अलाउड इट एट ऑल. पर वो बहुत स्पीड से मिस इन्फॉर्मेशन बार बार आपको देंगे, and that's why you'll see, and sure both sides से misinformation है, but you'll see how India has a larger frequency and a larger spectacle, larger wow factor कि भाई कराची का पोर्ट फतह कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया. And the reason is simple, so that people don't have enough time, enough resources, energy, and just not enough gap between two newses to fact check and verify it. इससे पहले कि कोई फैक्ट चेक करके आपको बताए कि यार ये जो पिछली न्यूज़ आई थी ये गलत है, 3 और न्यूज़ आ चुकी होती हैं. So that's why we always say that a war is much more about narratives than it is about the actual damage.